आपके पास अगर आपने 3 घर ले रखे हैं, एक को तो कुछ करो ना। सबसे पहला तो बॉस डू स्टार्ट। तो डॉक्टर का करियर भी 40 के बाद ही चालू होता है। पंचर वाला बिजनेस तब भी थोड़ा इजी है क्योंकि रोड पे होता है। फैक्ट दैट यू डू समथिंग यू लव। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आप GenX एंटरप्रेन्योर मतलब 40+ वाले लोगों को ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका क्या आइडिया और कैसे आपने इसको बिल्ड करने की कोशिश करी? सो 2-3 रीजन है, राइट। वन इज रीजन बोर्न आउट ऑफ फैक्ट्स कि एक्चुअली सक्सेस किधर ज्यादा है, राइट, दैट्स वन। सेकंड इज बीइंग अ जेनेक्सर माई सेल्फ, आई एम इन माई लेट 40s, सो आई कुड सी what's happening around me, right. My peers, colleagues, batchmates, right? What's really happening in that space. And the third one is obviously a little more about some investments we've done. Right. If those investments have to be taken forward, what are the kind of people I would trust? Right. Okay. Right. All the studies which have been done, and there is one which is a very famous one, MIT, did that study across some 2 million businesses. 2 million businesses. 2 million businesses. And they what it says is the chances of success for an entrepreneur are almost 3 times more in the 40+ category. Okay, like how is there studies are saying this or there studies, there absolute studies, right? I can share some links, maybe you can post. मतलब 40+ में क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस आ जाता है इसलिए ऐसा होता है या फिर I think maturity आता है, how you handle people, right? You have some domain expertise आ जाती है. You've been in some functional roles, आपको hire कैसे करना है, expand कैसे करना है. I think it's a mix of multiple things. Okay. पर आजकल इसी बात को मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूं, पर आजकल तो 18+ वालों में ये चीज आ गई है कि लोगों को हैंडल कैसे करना है, पैसा कैसे उठाना है, काम कैसे करना है. It depends. आप वो देखते हो, see the stories out of a young 18-year-old starting sounds very nice, but so I put it as 2 ways. When you're at a 18-year-old category, 18, 20, 21, 22, स्टार्ट करना बहुत आसान है. ओके, क्यों? क्योंकि आपका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, आपकी कोई जॉब नहीं है जो आप छोड़ के आ रहे हो, फैमिली नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके दोस्त भी उसी एज ग्रुप में है, तो आपको एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन करना है कि जिसमें यार मैं सेल्स देखता हूँ, तू प्रोग्रामिंग कर ले, तू मार्केटिंग देख ले, तू सोशल मीडिया देख ले, वैसे लोग जुटाना बड़ा आसान है, हॉस्टल रूम में बैठ के बन जाता है, तो आपका रिस्क कम है. यू कैन जस्ट क्विकली स्टार्ट ऑफ, नहीं चला अच्छा चलो अगला कर लो, या चलो एक नौकरी में निकल, जब तक शादी नहीं हुई तब तक कितना भी रिस्क ले लो, शादी करने के बाद भी ले सकते हो, बट इट्स इजियर, राइट. बट जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बन गया कि आपने 8-10 लोग ले आए, वो 30-40 लोग हो गए, फिर वो मैनेज करना, राइट, टू हायर द राइट टैलेंट, राइट, टू बी एबल टू हैव दैट मैच्योरिटी कि यार हाउ टू हैंडल पीपल, राइट, कल्चर क्या होता है, राइट, बिकॉज हंसी मजाक में बिजनेस करना पता नहीं है. आप हॉस्टल रूम में करके बहुत कुछ कर सकते हो, सबने हॉस्टल रूम में तो दुनिया भर की चीजें की हुई है, तो वही थोड़ा बिजनेस में भी आ जाता है. बट एट सम टाइम यू हैव टू गेट सीरियस, यू हैव टू हैव प्रोसेसेस, यू हैव टू हैव द डिसिप्लिन, यू हैव टू हैव द नुआंस कि यार ये प्रोसेस मतलब यू कांट फूल अराउंड विद इट, राइट. तो उसके बाद इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, राइट. तो स्टार्टिंग अप इज इजी एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव, एंड दिस इज माय व्यू, a lot of the money goes to them because it's very easy to get that money, right? They don't think too much, right? Okay, equity देने में भी दिक्कत नहीं है. 8-10 co-founder हो, housing.com had I think 10-14 whatever number of co-founders, you don't worry about it, right? You get in and you're going with it, right? Now if you're on the other side, 40+, your risks are very different, right? Your risks to start are very different. You have to think about your family, kids may be in school, you may have parents, you have a career, so there's always a trade-off कि अगर मैं अभी if I leave this job now, I'm letting go of whatever 3, 4, 5 lakh, 6 lakh, whatever per month I'm taking, and I'm going to go into something where maybe for a year or two I'm not going to earn anything. मेरा पैसा जाने वाला है, right? तो वो रिस्क अलग है. तो आप स्टार्ट आपका मुश्किल है, पर अगर आपका एक MVP के आगे निकल गया, आपके पहले थोड़े कस्टमर आ गए, उसके बाद आप वही करोगे जो आपने आपके प्रोफेशनल लाइफ में किया, राइट. आप उसके बाद आपको पता है प्रोसेस क्या होता है. अच्छा मेरा एक सेल्स वाला ये कर रहा है, इसी को रिपीटेबल करना है, तो मैं कैसे उसको रिपीटेबल कर सकूं, राइट. अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है 2 टीम्स के बीच में, मैं हैंडल कैसे करूं, राइट. ये नहीं कि रूट के चले गए कि यार मैं 2 दिन बात नहीं करूंगा. अब यू डू दैट व्हेन यू आर यंगर, यू प्रॉब्ली नॉट डू इट. सो देयर इज 2 वेरी डिफरेंट, एंड दैट्स वेयर आई थिंक द 40+ मेक्स इट, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कम विद एज, राइट. तो आप क्या बोलना चाहते हैं, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों, मतलब जो अर्ली एज वाले जो फाउंडर्स मतलब जो वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या 40+ वाले ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? वो स्टडीज ने बोला है कि 40+ वाला ज्यादा सक्सेसफुल. Data shows 40+ is more, but I can give you other examples. I've been running a product development company for the last 10 years, right? We do IT. Yeah, right. Maybe initially for the first 4-5 years, a lot of it was startups, right? किसी का MVP बना दिया, किसी का पूरा प्रोडक्ट बना दिया. Some of them have scaled.
उनका सीरीज ए हुआ, बी हुआ. सम हैव हैपेंड कि यार वो तो प्रोडक्ट बनते बनते को फाउंडर्स में लड़ाई होगी, हमको पता भी नहीं वो आईपी किसको देना है, ठीक है, बिल कौन क्लियर करेगा वो भी नहीं पता. एंड आई क्लियरली सॉ अ पैटर्न. इफ यू हैव बीन इन अ डोमेन फॉर अ लिटिल लॉन्गर, and maybe not necessarily 40 plus, even if you spend a reasonable few years in a domain, and your startup is somewhere in that domain, it need not be industry, it could be domain of skill, it could be whatever. Your chances of one getting it right and your chances of taking it forward are much better. And this is data which I have, right, from the pool of businesses we did. Great. बट जैसे ही पैसा आता है, मतलब जैसे जो यंग फाउंडर्स जो होते हैं, को फाउंडर्स आते हैं, उनको जैसे ही पैसा आता है वो सब पैसा डुबो देते हैं. फंडिंग आता है या फिर कहीं भी से पैसा है तो सब पैसा वेस्ट करने लग जाते हैं. I mean, I don't know if it's waste. इसमें दो चीज है. जो फंड कर रहा है उसको भी जल्दी है कि अगला राउंड हो, राइट. उसका वैलिडेशन कैसा होगा, राइट, कि राइट, आई मीन अगर मैंने एक बिजनेस में डाला एंड दैट्स अ अर्ली स्टेज बिजनेस, द ओनली वे आई कैन वैलिडेट एंड शो टू माय इन्वेस्टर्स इन द फंड दैट आई हैव मेड अ राइट डिसीजन is if the next round happens, right, absolutely. क्योंकि आप बाकी मेट्रिक्स तो आपको पेशेंट रखना पड़ेगा कि यार कैश फ्लो पॉजिटिव है, या you know you kind of scaling in a very organic way, right, or you can build an organization which can scale a little later. Those metrics you can't go and prove to somebody I made a good investment based on those metrics in the initial couple of years, right? So I think it's also those who invest who push, yeah, let me get it to the next stage. So my investment is also secure, right? I don't want to be the last one holding the can. I mean, this is the way I view it. I think a lot of this push happens from the investors also. मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जहाँ पे लोगों को एक बिजनेस करने में जान निकल जाती है, वहाँ पे आप एक ही बिजनेस के अंदर 40 से 50 मल्टीपल आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो. इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, मतलब कैसे आप हैंडल कर रहे हो? दो आंसर दो. पहला तो मेरे पूरे करियर में आई वाज हैंडलिंग portfolio of products. Okay. Telecom में था. Last, I think, before I started 7-8 years, I was heading telecom product portfolio is very vast. Right. Prepaid, postpaid, enterprise, SMS, NLD, VAS में ringtone, 10 टाइप के ringtone, उसको और आप breakup करोगे, हिमेश रेशमिया अलग, शर्लिन चोपड़ा के wallpaper अलग, right? So it would end up being almost, you'd be tracking at least 150-200 line items, right? Each one of them would have product managers who would report to me, right? And in a way, you were dependent on two sets of people. Right. One, you have to depend on tech and IT to implement those, and you have to depend on sales and the service organization to sell that. So that was my life for 7-8 years. तो मेरे से होता ही नहीं कि मैं एक पकड़ के and that was one. Right. Second, if you look at the structure we've done in GenX, it is around our core business of product development. Right. तो हम पहले भी औरों के लिए बना रहे थे product. Right. So if I've got 50-60 startups where we've done products, हम उनके लिए प्रोडक्ट बना ही रहे, पहले ही बना रहे थे. तो वो हमको एक आइडिया देते हैं, हमको यार एम्बुलेंस का उबर बना दो, राइट, तो हम फिर वो बैठ के रिसर्च करके बना ही देते हैं. फर्क इतना कि उधर उनका पैसा आता था, अभी हम लोग बना लेते हैं अपने आइडिया को. उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग नाउ, द स्ट्रक्चर वी पुटिंग इन इज कि देन वी फाइंड समबडी टू रन दैट बिजनेस, राइट. इट्स नॉट स्ट्रेइंग अवे फ्रॉम समथिंग, हम अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं. ओके, एंड वी ऑलवेज हैव बेंच, राइट. हमारा कभी ऐसे नहीं होता कि सब ऑक्यूपाइड है. At all times 20-25% bench होता ही है. Absolutely. And we're not a staffing business कि आज bench पे है तो निकल गया. We are a pure product design and development business, right? तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री अच्छी होती है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री अच्छी होती है? सर्विस बेस्ड में बहुत टाइम पेशेंस लगता है. टाइम और पेशेंस देना पड़ता है. बट सस्टेनेबल है क्या वो? बिल्कुल है. कितना सस्टेनेबल मतलब? बस एक बार चल गया. So I was given this advice, right? So I had 2 product businesses and I was a service business, and the service business had not scaled. Okay, वो मतलब मेरे हिसाब से नहीं स्केल हुआ था, चल रहा था ठीक ठाक, क्लाइंट्स आ गए, अच्छे प्रोजेक्ट किए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट्स भी डिलीवर किया. पर इसमें ना वो जो हेडलाइन टाइप न्यूज नहीं था कि कल वैल्यूएशन होगा, कल आपको बड़ा इन्वेस्टर आके आपको कुछ $1 million $multi-million, वो वाला कभी होने नहीं वाला था, राइट. सो व्हेन यू गेट इन यू आल्सो फैसिनेटिंग सा लगता है कि फैसिनेटिंग लगता है ना. सो द प्रोडक्ट स्टोरी ऑलवेज साउंड्स ग्रेट. तो वो चलता गया. एंड देन देयर वाज दिस पर्सन हु एडवाइज्ड मी, एंड आई मीन इट वाज गेटिंग अ लिटिल टफ ऑन द प्रोडक्ट साइड ड्यू टू वेरियस रीजंस. He said, "Yeah, see, these will always be risky, right? You have a 1 in 100 chance of making them really take up, and you have a service business which you've not realized it, but over 5 years, you've built a decent, credible body of work. Right. You have a good core team. It delivers. Right. Okay. So why not scale that? Because that will at least make sure that you have decent cash flows. Even if nothing works out after 10 years, you'll have something to show that if I let go of a career, there's something I've something I have earned." Right, and that kind of stuck in my head. It's not a one-man show. It's not a one idea
business. Right. Product business are like you're solving one problem. One problem right? only. Service business, yes, it may be a problem, but it's over a lot of places. You're customizing it every time. Yeah. So it can never be driven by one person. If you ask me, my own role, right, from initially being the person who front-ended the solutioning, the design of a solution, today I think 95% of my time is HR and finance. right. Entrepreneurial life में यही actually. Yeah, but in a service business even more. Right. If you're in a product business, you will still be wanting to see every button or every experience you've created in the product UI, right? Right. But if you're in the service business, after a while you can't. नहीं कर सकते. You will meet the client the first time. You will present your credentials if it's a big client, and the client will love it. And the client also knows they're not going to see you after that. Right. Absolutely. Right. Yeah. And then you're in the background back to HR and finance, right? So service business is you have to be patient. Right. You have to have the ability to delegate and empower people. Right. You can't be a micromanager in a service business. नहीं कर सकते बिल्कुल. सबका अपना अपना दिमाग है, अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने अपने हिसाब से कैंपेन डिजाइन करेंगे. सर्विस बिजनेस इज लाइक अ डॉक्टर्स बिजनेस. Yeah. ठीक है, आप नए नए कार्डियोलॉजिस्ट बने, आप एक नए शहर में पहुंचे, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, राइट? पहले दिन कोई नहीं आने वाला. वो बोलेगा यार ये मेरा ऑपरेशन कर दिया, क्या पता बच्चू ना बच्चू, राइट? अच्छा, गलती से कोई एक आ गया आपके पास, उसको ठीक कर दिया, दो को ठीक किया, तीसरे को ठीक किया, उसने जाके 2 जन को बोला यार मेरा ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, इसने बचा लिया, भगवान, डॉक्टर भगवान समान है, सब हो गया. उसके बाद वो 3 ने 5 को बताया, वो 5 आ गए, 5 ने और लोगों को बताया. तो डॉक्टर का करियर भी 40 के बाद ही चालू होता है. राइट. टाइम लगता है. सर्विस बिजनेस लाइक दैट, राइट? इट टेक्स टाइम. Right? उसमें लक फैक्टर भी मैटर नहीं करता, I guess. So you hear about the good ones, right? And then so it plays on. You build a credibility. You have references. Like we didn't have a sales team till a year ago for our service business. Sales team की requirement ही नहीं होती. ऐसे मुझे भी अब जाके पता चला कि sales team की requirement नहीं होती. It's all referral. Yeah. It's all referral. कोई पूछ लेता है कहाँ से बना है, या उस कंपनी का जो आपको डील कर रहा था, वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया, उसने आपको उधर बुला लिया, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस बिजनेस ऐसा होता है कि जैसे टायर पंचर की दुकान उसने लगा रखी, कोई मार्केटिंग नहीं कर रखी, टायर पंचर होगा, आदमी आएगा, पंचर निकलाएगा, चला जाएगा. ऑलमोस्ट लाइक मतलब लोग आने चाहिए आपके पास, आपको उनको पता होना चाहिए यार यहाँ पे दुकान है, या फिर किसी से पूछ लेंगे. पंचर वाला बिजनेस तब भी थोड़ा इजी है क्योंकि रोड पे होता है. रोड पे अब आप सोचो, आपका पंचर वाला बिजनेस रोड से थोड़ा दूर हट के है, ठीक है? तो आई मीन सो इट्स लिटिल डिफरेंट. प्रोडक्ट बिजनेस क्या है? इट्स लाइक अरे यार मेरे को कहीं से जड़ी बूटी हार्ट लग गई, ये आप खा लो, कल से आपका हार्ट एकदम ठीक हो जाएगा. ये वो वाला. अब वो जड़ी बूटी से कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है? आपको भी नहीं पता. आप वो खिलाओगे 10 जन को, अगर ना ठीक हो, उसने तब भी बोला बच गया मैं, वो तो वैसे ही हर कोई नहीं मरता, ठीक है? तो चल गया तो चल गया. तो it's a little different, right? The other thing I also learned, it's all execution. Execution is more important. It's all execution. जो हमने ओवर इंजीनियर कर दी है, हमको लगा यार इससे अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता, हमको तो मतलब एकदम गूगल हायर करेगा कि आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, वो चलेगा. सब यही सोचते हैं आजकल. So I think after a while it's execution. Right. Execution is a factor of a lot of things. There's luck involved, right? In service business, it's a little more spread. One doesn't work, something else works. You pick that up. Right. You spread yourself a little more. जो आपके साथ काम करता है, मतलब जो चीज आपके लिए काम कर रही है उसको रिपीट करते जाओ कि मेरे लिए काम कर रही है. रिपीट करते जाओ, या अभी जैसे डॉक्टर का बोला है, अभी 10 में से एक नहीं बचा पेशेंट, पर आपका 9 तो बच गया ना. बट प्रोडक्ट बिजनेस में आप एक ही कर रहे हो टाइम. आप इतने सारे डोमेन में काम कर चुके हो, तो आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? It's not whether होनी चाहिए ना होनी चाहिए. It's about who's consuming the media. Right? Where are you consuming media? मेरे घर में आज out of 3 TVs, nothing has got DTH or anything. It's purely on OTT. On OTT and on Wi-Fi, right? And Netflix चल रहा है, YouTube चल रहा है. If I look at my son, वो सीधा show me video of this, that. So it's changed. Right? It's changed. So media आप देखोगे जो traditional media था, by appointment, TV channel. I have not consumed a proper TV channel in I don't know how long. तो मैं तो न्यूज़ चैनल भी नहीं देखता हूँ, तो मतलब अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया. न्यूज़ चैनल तो कल परसों शायद मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ कि न्यूज़पेपर वाला मेरे को दिखा मेरे अपार्टमेंट में. मैंने कहा आज भी कोई पढ़ रहा है कि न्यूज़पेपर? बोला हाँ सर, सारे पढ़ रहे हैं. तो वो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ज्यादा ही देखने लग गए सोशल मीडिया, तो शायद वो सोचते कि पेपर पढ़ ले. मैंने कहा मेरे को भी दे देना कल से एक. Obviously newspaper still would go, right? Because they are a little more local, right? Your unfortunately the social media or whatever you consume, that is algorithm driven, so you don't get a spread of news, right? तो आपको थोड़ा सा cluster हो जाता है, right? Press still brings something,
But then that share is shrunk ना. पहले अगर सुबह उठ के आपका 1 घंटा जाता था प्रेस में, आप अभी तो कट करके निकल गया, राइट? That news is also stale. So the good thing about press is because जो न्यूज कल का था वो तो ऑलरेडी आप कंज्यूम कर चुके हैं. They also get you news which you probably have not consumed so far, right? So press I think is a little more. It may not be as vast. It will shrink, but the rest of it, television and all, it's all nothing is. It's only going to change. अभी 5G आएगा, phones are going to, smartphones will penetrate further. अभी मैं देख लूँ कहीं भी, उस दिन एक फोटो लिया था मैंने, इट वाज अमेजिंग. हम गाड़ी जा रही थी, सामने ट्रक था, लेबर भरे हुए थे, एंड आई टोल्ड माय वाइफ, ईच वन वाज जस्ट सीइंग समथिंग ऑन द मोबाइल. सब ऐसे ही करके देख रहे, सब लगे हुए मोबाइल. तो जब आपका मीडिया शिफ्ट हो गया, पूरा कंजम्पशन शिफ्ट हो गया, तो आप डिजिटल उधर ही जाओगे ना, राइट? एंड दूसरा क्या है, अभी वो ट्रेडिशनल भी क्या कि आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ये मेरा एड है. नाउ यू गेटिंग मोर इनटू इंटरैक्टिवनेस, यू वांट पीपल टू पुश, and then of course then everything else also comes in, whether you can retarget, how good is your targeting, right? A lot of things have changed, right? So digital media, there's no escaping it. Absolutely. What do you do with it is different, right? You can't just be into a mode of broadcasting any longer. So जो नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं अभी 40+ वाले, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है आपकी तरफ से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? सबसे पहला तो बॉस, do start. Okay. See, it's a pyramid. Right. Corporates are a pyramid, right? If you look at the whole, any company is a pyramid. Right. आप एंट्री लेवल पे घुसे, आपके साथ हो सकता है 20 लोग आए, सीईओ एक ही बनेगा. ओके, वो भी आउट ऑफ 5-6 बैचेस एक सीईओ बनेगा, राइट? तो हर 50-60 जन के लिए जो घुसे एंट्री लेवल में, अब मैं छोटे कंपनी की बात कर रहा हूँ, कईयों में तो 100 लोग घुसते हैं एक साथ, तब जाके एक सीईओ बनेगा. तो डोंट अज्यूम करियर विल गो ऑन, राइट? अनफॉर्चुनेटली जो अभी जो जेनेक्स है, जो ऑल दोज हु एंटर्ड आफ्टर लिबरलाइजेशन इन द 90s, they're all in their 40s and 50s now. Right. This is the first time the generation is seeing how far this corporate thing goes. It doesn't, and it will narrow down. Right. So you should have a plan B, and that plan B can't be anything other than entrepreneurship. That's one. There is nothing like मैं कल चालू करूँगा. Oh shit, I lost my job, or I am bored. Let me start. Because वो let me start or actual starting, and it becoming a sustainable starting, there's a long gap. Right. So at all times, I would suggest once you're 40, have a plan B. Yeah, right. It could be other things. It could be even being self-employed. It could even be you've invested well, you have money, you manage your investment or your portfolio. But you can always have an entrepreneurship somewhere. Right. And whatever be it, you can always start on the side. Start कीजिए, at least start कीजिए. The other big advice, don't go out of your domain. मतलब यही बोलते हैं लोग कि मतलब आपने जो 40 साल तक जो सीख लिया, उसी को इम्प्लीमेंट आगे करो. उसी को करो ना, क्योंकि अगर आप मान लो आप एक इंडस्ट्री में, आपको पहले ही पता है इंडस्ट्री के डायनामिक्स क्या है, सब कुछ पता है, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, आपने क्या प्रॉब्लम फेस की अपने करियर में, ठीक है? अगर आपने चलो उस इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का डिसीजन लिया, आप वो किसको बेच सकते हो? पहले 3 या 4 कस्टमर कौन होंगे? जो आपके जान पहचान वाले, आपके जान पहचान, आप उनसे पहले ही बात कर सकते हो, बल्कि आप तो प्रोडक्ट बहुत बात बना सकते हो, पहले ही सेल कर सकते हो, तो पहले ही आप सेल कर सकते हो, राइट? मेरा यहाँ पे एक मानना है कि अभी आजकल हो क्या रहा है कि जितने भी जेनजी जो नए लोग आ रहे हैं अभी, वो क्या करते हैं 4-5 साल तक 6 साल तक तो अपना कैरियर एक चीज में बनाते हैं, फिर क्या बोलते हैं मेरे को मजा नहीं आ रहा है. वो 5 साल तक तो उन्होंने कंफर्ट जोन बनाया, उस चीज को सीखी, डेप्थ नॉलेज लिया, अब बोलते हैं आई वांट टू चेंज इट. वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं, जबकि वो कंफर्ट जोन में आने के लिए ही उन्होंने इतना स्ट्रगल किया था 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल. और कुछ लोग ऐसे भी है जो 40 तक आने के बाद में बोलते हैं नहीं यार आई वांट टू ट्राई न्यू थिंग, और जैसे भी न्यू थिंग करते हैं तो उनका पूरा एंटायर कैरियर आई थिंक खत्म हो जाता है. ऐसे नहीं, वापस जीरो से स्टार्ट करना है. एक आपका स्ट्रगल अलग होता है, right? क्योंकि आपको I shifted from a pure telecom product marketing service industry to IT services. I know the struggle I went through, because there are things you have to learn, and वो नहीं है कि आप किसी के साथ बैठ के उसने आपको सब बता दिया. Again learn करना पड़ेगा. Some things come with mistakes, some things come with your experiences, some things come because you're doing it, right? It's also important. It's not just the domain, it's not just the industry. Sometimes even the skill you've developed. Right. So if you're into digital marketing, it can apply to any business. Right. Now you can figure out whether I want to go to D2C, right, or I want to set up an agency. So it also depends what skill. It's not just the industry. If you're in procurement, for example, right, and you're procuring in a particular industry, and वो इंडस्ट्री की अपनी एक सेट ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिर आप वो छोड़ के कहीं और जाओगे जहां आपको नया सप्लायर ढूंढना पड़ेगा. मे बी इट्स टफर, बट इफ यू डील इन द सेम, मे बी नॉट इवन द सेम इंडस्ट्री, you're dealing with the same suppliers, you're still not digressing too much, right? So it's not right to classify it as whether it's industry or whatever, right? It is what are those inherent nuances of some particular elements of your current company, your industry, or your function that you've learned, which you can leverage. Absolutely right. So it will be not very fair to straitjacket it saying कि आप जो इंडस्ट्री में उसी में रहो. Could be anything else. बहुत सारे लोग जो टेलीकॉम में थे,
वो उधर से they could easily transition to OTT platforms. Right. Right? Because it's not like it's a completely different industry. But वो nuance same था. You have customers to whom you have to sell content, right? And they pay for it on a subscription model, right? So there's some commonality, right? And you have to keep enticing them with new content. पुराने ही content को rehash करके दिखाओ, right? उसका एक अलग snippet बताओ, right? So it's more about picking elements and being sure which are the elements which I can still use. एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, being wealthy और rich आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Looking rich is good or being wealthy is good? It's all very subjective. Okay, to be honest, it's very, I think as somebody said, right? I am no clue who said it. It's wealth or rich, whatever. It's the freedom to do what you like to do, right? As long as you can manage that, I think that's important. Like my journey, I don't think I've become. I don't know. We've not put a business up to for evaluation or anything. But the fact that you do something you love, right? I think that itself is very rewarding. तो फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? मान लो आपके बच्चे होंगे छोटे, तो अगर आप उनको कुछ टाइम, अगर आपको पहले से नॉलेज होता है, आप उनको फाइनेंशियल एजुकेशन पहले से देते, तो शायद उनके लिए लाइफ चेंज हो सकती थी, या फिर आपको देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? आई थिंक फाइनेंशियल एजुकेशन भी बहुत टाइप के, राइट? हाउ डू यू फाइनेंशियल एजुकेशन इन द सेंस कि आपको मतलब जैसे अपन 12th क्लास पढ़ लिए, 12th क्लास पढ़ना है, कॉलेज पढ़ना है, उसके बाद में आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसना ही घुसना है, तो शायद आप फाइनेंशियल एजुकेशन पहले ही दे दो कि आप अगर आप इस फील्ड में घुसने जा रहे हो 12th के बाद या इंजीनियरिंग के बाद या MBA के बाद में, तो आपको ये कॉर्पोरेट में जाना पड़ेगा। बट अगर आप कोई एक लर्निंग पहले से 6th क्लास या 7th क्लास से आप स्टार्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि पैसे की क्या वैल्यू है आने वाले टाइम में, कि आपको कितना मिल सकता है, क्या चीजें मिल सकती है। तो इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? I think most important is to understand the cash flow part, right? And I keep telling my wife here, I someday I should get my son to just run a kirana store for 3 months. right. कैश फ्लो कैसे होता है? Cash flow is, I think, the key part here, right? क्योंकि वहां से आपका सब, I mean, I'm talking from a business perspective, not from a personal perspective. From a business perspective, if you can understand what's the cash flow, what point do you need money, what point is money going out, or what point is money coming in what velocity it's coming in, what quantum it's coming in, and what are the commitments you make, what implication it may have in the future. I think those elements are very important, right? And especially when you're salaried, you don't factor all that in. आपका पैसा आता है which is guaranteed, so you get paid that much. Now when you get paid that much, you may also commit it further in a similar way कि यार मैंने घर का ले लिया, EMI ले लिया, so SIP कर दिया. So you're also in a way, it's all very structured. Right. The moment you're out of that structure, where the inflows are not predictable, outflows are not predictable, right? Unpredictability. Right. I think important to understand that. Right. I think that is called life. Unpredictability should absolutely be a right? अगर आप एक स्ट्रक्चर वे में पूरी जिंदगी निकाल दोगे, तो आप 60 साल में सोचोगे मैं तो पूरी जिंदगी स्ट्रक्चर में निकाल दूंगी। I'll give a very simple example. Now GenX, we have a simple philosophy कि when we get a co-founder on board, invest something, right? Invest something so that there's a feeling कि you have taken a decision to be an entrepreneur. Right. If you walk in without putting some money in and you say, I want to be co-founder, you've kind of become an employee, right? Who's taken some stake, and you get some salary or whatever, right? Depending on how it's funded. Now, if you look at the generation which got into the 90s, all of us got the good end of the real estate market, right? Early 2000s, prices were low. आप बिना दिमाग लगाए कहीं लोगे, double, triple हो रहा था. अब lot of the wealth has been built in around real estate. It's the most illiquid. It's the most, now it's negative returns. If you factor in inflation and the fact that it's not increasing, rental yields are not going up. Why won't you leverage that? Right. आपके पास अगर आपने 3 घर ले रखे हैं, एक को तो कुछ करो ना. Absolutely right. Right. So that whole notion of stepping out, doing something with that safe investment, I think those barriers are what are also restricted a lot. Right. So sometimes I think that relationship with money, that money is, debt is not bad. Right, absolutely. Right. It's not bad. Secure it with something which you can afford to lose. Right. I mean, if you say, look, I've got a house which is worth, let's say, 1 crore, and I take a loan of 20 lakhs, right, to start something. It's not a bad deal. Absolutely. Specifically those who are above 40. When you're growing up in the 80s, right, growing up in the early, the whole focus was, no parent ever said, beta bada hoke business chalo. Right. बेटा बड़े होके अच्छी नौकरी लेना. वही कहते हैं नौकरी एकदम कंडीशन हो गया. हर हिंदी फिल्म में अगर मकान गिरवी हो गया, वो 5 मिनट का डायलॉग होता था उसमें, ये ना कि ये मकान गिरवी कर दिया, पूरा फैमिली में ढैंड बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑल दैट वुड हैपन, राइट? आजकल तो सोना गिरवी भी रख रहे हैं, बट लोगों को पहले उसको टाइम भी बहुत खराब माना जाता था कि और यार सोना जेवरात गिरवी रख दिया हमारे. तो सोना और घर ये दो गिरवी रखा, ये कंडीशन क्या, इज द वर्स्ट थिंग. Whereas debt is probably
affordable debt. Right? I'm not saying go blow up everything. You have one house, wo daloge when it's probably that's probably not on. But we all have some wealth because our nature in India is we create wealth in things which are very safe, gold and land or house. Right? There'll always be some portion which you can leverage. Absolutely. And it's the cheapest form of capital. Right? You don't give away equity initially. You get it to a point. Rather than say on day one, yeah, let me get equity somehow. Right? Let me get capital somehow, and then you commit so much of equity that afterwards there's no leverage left, right? Or you hold yourself in a kind of term sheet with all sorts of conditions where it doesn't give you flexibility to experiment yourself, right. Because it's not just a venture; you're also learning yourself, right? It's not just the product which is an MVP. You're also MVP of an entrepreneur, right? There are two things at play, right? So it kind of boxes. So I think that relationship with money, that relationship with understanding what leverage you have in life, very important. आपके अकॉर्डिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब लाइफ का सबसे ज्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट? You can always keep investing in yourself. You can learn new skills. कोई करता नहीं है ना, मतलब आप सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए बोलता है कि खुद में इन्वेस्ट करो, स्किल सीखो, ये करो वो करो, बट कोई भी नहीं करता आज के टाइम में. I think in this day and age, I think the most important investment which people can do, especially since you are getting hold up, and I'm saying more from a younger generation. हम लोग तो अभी we're all hitting 50s and जो होना था अभी you'll kind of I think it's to be able to still understand how human beings work. Social media is not how the human mind works. Social media is how the human mind wants to project it to work. Reality is very different. How do you deal with people? How do you resolve conflict, right? How can you get people to collaborate? How can you collaborate? Those are investments. So for my kid, I put him in all sorts of things which are not necessarily skills. Right. It just exposes him to people from different backgrounds, right? You can't get cocooned into your gated community, and that can't be the only kind of people you deal with. You got to deal with somebody who's not so fortunate on the financial side. You got to deal with somebody who may be not so skilled. So you have to. I think it's all about being able to understand people better. Finally, kuch bhi ho jaye, it's some human being consuming it. What is the best financial advice you have received? Well, I think the most critical one in this journey was focus on the service business. Okay, so right, not for any other reason, because he said there's no point in flogging a horse which you can't see running right now. Right. You need to have breathing space, and you need to live to fight another day. Right. So I think that was very personal in a way what I got. Second, I think I don't know. I don't think I've got any other kind of advice which is. आपका एक बेस्ट कोट चाहिए जो आपकी शायद लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है. I think I want that. The 20-year one? Yeah. No, that's not my quote. That's a very old Chinese quote. Ki the best time to plant a seed was 20 years ago. Right? The next best time is now. Right? But ये लोग इसको आप थोड़ा और एलिब्रेट करोगे, लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर आज हम वास्तव में किसी चीज का सीड लगाएंगे तो उसका फल आने वाले टाइम पे ही मिलेगा. So बहुत सिंपल सा है. नहीं समझते नहीं लोग कि यार अच्छा ठीक है आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों कर लेंगे. तो आज आप 40 ईयर में किसी को बोलना चाहते हो कि अगर आज आप स्टार्ट करोगे तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले 5 साल या 10 साल में आपको मिलने लग जाएगा. So I personally think just live your life. Yeah. Make your mistakes. Yeah. Do things, right? There's no point in being too careful, right? Because you don't know what works, what doesn't, right? There's nobody, every advice or every book, every self-help book, autobiography is all written in hindsight. Right. You ask Steve Jobs to write a book when he was 20, it may not be nothing like what his life meant. Right. So you don't know what's going to happen. Right. तो आप क्या सिर्फ कनेक्टिंग डॉट्स करते हैं क्या अपन? मतलब मेरे को और समझने की अगर कोशिश करूंगा कि हमने पूरी लाइफ जी ली, 50 साल तक जी लिया, मिस्टेक्स कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इसके बाद हम सोचते हैं अच्छा हमने ये किया था क्या, फिर भी आज हम ये, तो शायद हम ये उस दूसरे डायरेक्शन में कुछ करते तो शायद हम कुछ और होते आज. वो सोच के क्या फायदा होगा? There's no point in going back and thinking if this had happened. वो तो हो चुका ना, वो निकल गया, अभी उसको पकड़ के आप क्या बैठोगे? Right? It'll play on your mind a bit, right? But best to just get up and see what happens next. Again वापस next क्या आ सकता है? Next क्या आ सकता है? And you have no clue what's going to happen next. तो आप calculated risk में विश्वास रखते हो क्या? बिल्कुल. There's this concept called affordable risk. Can you afford this risk? Can you afford it if it goes bad? As long as you can afford it, take the risk. Money आपके लिए क्या है? Money is not such a big deal for me, right? I mean, maybe I've been a little fortunate, okay? So I didn't have to struggle in my life. So for me, I was very happy with the way my lifestyle was, to be honest, right? Okay. Financial stability के बारे में क्या कहना चाहते हो? But it keeps you stress free, right? Definitely. Right. It doesn't force you to do things which you're doing out of desperation. Like there are people who want to become an entrepreneur because they lost a job
and they can't see themselves getting a job. Then you look at entrepreneurship, you're making very silly decisions because you're only bothered about can the money stream come in, right? Absolutely. Right. So financial stability is important so that you're not making stupid mistakes. मल्टीपल स्ट्रीम होने चाहिए आपके पास रेवेन्यू आने के, या फिर एक से ही काम चलाया जा सकता है? यार अब वो डिपेंड करता है, आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है, चल रहा है, बंद हो गया, then you have to diversify, right? छोटे 10 चला के फायदा नहीं। अच्छा, आप ये कहना छोटे 10 चला के कोई फायदा नहीं है? मेरे हिसाब से छोटे एक को तो पकड़ो ना, right? See, there are two different things. One is, are you running a business to get multiple cash flows, or are you spreading your investment bucket? As an entrepreneur right now, I'm all in what I'm doing. I'm not invested in anywhere else, right? Because आपके बच्चों को आप क्या सिखाना चाहोगे, मतलब लाइफ के बारे में? And I figured the most important thing is to deal with people. Absolutely. Right? If you can't deal with people, different types of people, it's very easy to get cocooned. Okay, I'm in a school, everybody is speaking English, they're all from well-to-do families, you know. If you get cocooned there, at some point in time, you lose perspective of life, right? So I think most important is you need to deal with people, all types of people. Also brings in empathy. It also makes your decision making a lot more grounded. What about networking? Networking again is are you doing purposeful networking, or are you doing natural networking, right? You deal with people, you're connecting with them. So networking doesn't mean I got to go and just connect with you, right? It also means connect with you in the sense phone number le liya, baat kar liya. There should be some connect, right? See, a good salesperson never sells you. He connects with you, and then after a while, you automatically buy from him. Absolutely. Right? आप गए, you know that networking meet है, इधर इवेंट चल रहा है, नेटवर्क, आपने एक कार्ड दिया, उसने कार्ड दिया, अब वो उसने कार्ड सेव, वो आपको लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकता था ना, आप you didn't connect with the person. There was no emotional connect. There was no alignment. You didn't share something which he aligned with, or he or she aligned with, or they shared something which you aligned with. You just exchanged cards. You've got off, and you probably know a little more information than what LinkedIn would have. इस तरह के पॉडकास्ट के बारे में आपका क्या कहना है? इससे कनेक्शन बनता है? You again hear out different types of people. Yeah. Right. Some questions you're asking which I'd never even thought of. Yeah. Right. So and I don't know if I actually given the answer which would have been the best answer. Right. I think when people listen to such podcasts, obviously they listening to different types of people with different experiences and so on. Right? आप ज़्यादा क्या देखते हो, YouTube या फिर Instagram? I'm not on Instagram. You're not? I'm not on Instagram. I'm not on Facebook. I'm not on और क्या है, Twitter. I'm only on LinkedIn. Okay. Only on LinkedIn. Unfortunately, YouTube? LinkedIn is also getting very cluttered with all sorts of. अभी तो ज़्यादा ही हो गया. YouTube, very selective. Okay, so YouTube is not a social media, fortunately. So I follow football quite a bit. So I watch some analysis of matches, or Right. Self motivated होना ज़्यादा important है, या फिर आप किसी को देख के बार-बार motivate हो? I think self motivated is more important. But कैसे हुआ जाए, मतलब उसके बारे में अगर कुछ नहीं हो, मतलब कितनी बार आता है कि यार छोड़ो यार क्या करना है? दो टाइप के होते हैं, या तो एक आपको एकदम पैशन से ड्राइव कर रहा है, या डेस्परेशन से ड्राइव कर रहा है. दोनों आपको मोटिवेट कर सकता है. Okay, so I think desperation wala is not the desirable one, but sometimes the fact that, hey, look, if we don't get there, there's a problem, that motivates you, right? Whether it's good motivation or bad, but it motivates you, right? And the other one is, wow, if I get there, it's amazing, right? So I think it's both. A situation can motivate you, right? Or a potential scenario, which is a very desirable scenario, can motivate you, right? People motivating you again has to be, it'll be a reflective of the scenario you want to be, right? Right. I like that person, the scenario that person is in, so it motivates me. Thank you, Joseph sir. Thank you so much for coming. Great to podcast. Have this chat. काफी मजा आया, मतलब आपके साथ बात करके, and we learned a lot कि मतलब कैसे complex situation को कैसे handle किया जाता है, multiple portfolio कैसे handle किए जाते हैं, और नए co-founder कैसे बना जाते हैं. So I think from you there are so many people who will learn a lot कि एक co-founder, मतलब एक mental barrier को निकाल के हम एक नई जिंदगी में कैसे जा सकते हैं. और जो हमने आज एक बात सीखी कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो आपको फियर दूर करती है, और हम उससे कुछ भी कर सकते हैं. और शायद लोन लेना या फिर कुछ रिस्क लेना, इट्स नॉट अ बिग डील. आपको ले लेना चाहिए और आपको काम कर लेना चाहिए. गो फॉर इट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू.